Assalamu alaikum. So the topic we're going to be focusing on today is hydraulics. ये तकरीबन प्रेशर का एक सब टॉपिक है हाइड्रोलिक्स. शुरू करने से पहले आपको इसमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि प्रेशर इन सॉलिड्स का फॉर्मूला क्या है. प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इट इज़ द फोर्स अपॉन यूनिट एरिया. ठीक है. इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि दैट liquids are not compressible. ठीक है, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. चलिए, तो अगर मैं स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल से शुरू करूं तो लेट्स टेक अ लुक. लेट मी अपलोड अ फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. ये एक एग्जांपल है एक एक्सकेवेटर की. ये काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा रोमिंग अराउंड यू. If you take a closer look at this, and this, you might see these silver cylinders. अब इनका काम क्या होता है? They're actually acting like muscles of this excavator. ये इसको function करने में मदद कर रहे हैं. होता क्या है कि these are using fluids and the pressure and this pressure to actually lift quite a heavy load. इसी कुछ और एग्जांपल्स भी आपको नज़र आ जाएंगी आपके अराउंड. लाइक लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल. जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर में फोकस करूं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक सिलेंडर दिख रहा है, जैसे कि ये रहा. यहाँ पर भी है एक एग्जांपल, यहाँ यहाँ और यहाँ पर भी नज़र आ रही है. These are all hydraulic pistons. अब हम बात करेंगे कि ये काम करते कैसे हैं. काम करते क्या है ये तो पता चल गया कि ये काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकते हैं. अच्छा, let's remove these. So basically in hydraulics we have two cylinders. Let me draw one. The one controlling the hydraulic fluid is called a master cylinder, जो कि मैं अभी बना रहा हूँ. And the one being controlled is called the slave cylinder, जो कि I'm sorry about my drawing, इसको अभी used to नहीं हुआ हूँ. The slave cylinder. Now a cylinder also comes with a piston, जो कि मैंने यहाँ बना दिया है. Also a slave piston. अच्छा, the thing to note is कि inside these cylinders there is a fluid, usually oil. अब यहाँ पे oil क्यों होता है? ठीक है, we come to a part जो मैंने लिखवाया था आपको कि the liquids are not compressible, which means कि if I compress this piston here, ये pressure पूरा का पूरा इस oil में transfer करेगा and this oil would not compress, which means it's going to transfer the whole pressure into this cylinder. ये एक बहुत बहुत important चीज़ है. अगर यहाँ पर air होती, it would have compressed and could not have transferred all of the pressure towards the other side. अब होता क्या है? Let's suppose we have a piston and its area is A1 and the force applied on this piston is F1. ठीक है? This force and area would actually create a pressure, and by the formula told you earlier, we know that pressure is equals to force upon area.
और अभी मास्टर सिलेंडर की बात हो रही है, इसमें हम यूजुअली वैल्यूज डाल देते हैं F1/A1, ठीक है। अब this pressure created inside the oil is going to be transferred over to the slave cylinder. Let me mark it as slave cylinder. Now this cylinder is going to feel a force upwards, let's call it F2, and this piston is always going to have obviously an area of A2, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, that pressure would be P2 is equals to F2 over A2, ठीक है। अब पास्कल्स लॉ की वजह से मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो प्रेशर 1 जो है पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इन प्रेशर 2। तो इसका मतलब ये है कि F1/A1 इज़ इक्वल्स टू F2/A2, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ हाइड्रोलिक्स। जब भी आपको ये एग्जांपल दिखे कि एक पिस्टन दूसरे पिस्टन से कनेक्टेड है, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से फ़र्क क्या पड़ता है, ये कैसे ज़्यादा लोड उठा सकता है, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल के देखनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज आई प्लेस F1 एज 20 न्यूटन्स और A1 एज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। F2 I need to find out and A2 as 25 centimeters would do, centimeter square. Let's place it in this formula and let's see what we come up with. So F1 was 20 upon A1 is 5 is equals to F2 we have to find out, so X A2 is 25. So when we calculate for X, we come up with 20 times 25 over 5 is 100 newtons. So math tells us that by applying a force of 20 newtons, I get a force output of 100 newtons. क्योंकि only because the pressure in these cylinders is constant. इसी वजह से by applying a much smaller force, you are actually getting an output of a much larger force. ठीक है? But there is a, let's call it a compromise. होता क्या है कि if this cylinder presses downwards, let me draw another one. आपको ये पता है कि एक मास्टर सिलेंडर जो मैंने इस वक्त बनाया था, उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कंपेयर टू द स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये पूरा का पूरा मास्टर सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो जाए, the fluid would be transferred into the slave cylinder, और अगर इसका piston initially यहाँ था तो it would hardly move this much. क्यों? क्योंकि the cross sectional area of the master cylinder was lesser than the slave cylinder here. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम इकट्ठा होता है it is much lesser than the volume here. तो मास्टर सिलेंडर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और स्लेव सिलेंडर बहुत कम। इससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है डिस्टेंस का, बट ऑन द अदर हैंड वी गेट अ मच लार्जर फोर्स, अ मच लार्जर लिफ्टिंग फोर्स. This concept can be used everywhere, including brakes, in the brakes used in cars, the brakes used in bikes sometimes, and many other examples like I've shown you previously. अब इसमें कुछ questions होंगे
those questions will be given to you and you have to attempt them. So we're going to meet again in the next video. Until then, try your best, and you can actually watch this video as many times as you want, and if you have any questions just ask me. ठीक है? Allah Hafiz.